आर्सेनल फैंस आर्सेनल फैंस खुश तो बहुत हो गए आज। मैं तो बहुत खुश हूँ। आर्सेनल टॉप ऑफ द टेबल, लिवरपूल की स्लाइड हो गई है चालू। आज करेंगे हम डायसेक्शन आर्सेनल के सीजन 10 पार का। मेरे साथ ज्वाइन कर रहा है एक और आर्सेनल फैन, रितेश। यू नो हिम वेरी वेल ऑलरेडी। वो भी बहुत खुश है। तो आओ चलो आज घुसते हैं आज के एपिसोड में। रितेश, क्या हाल है? खुश तो बहुत हो गए। I'm very relaxed, Rahul. I'm very relaxed. Finally, Arsenal on the top of the league. देख ही सकते हो मेरे घर में कितनी शांति है। कोई स्ट्रेस का माहौल नहीं है। इतनी खुशी, इतना आराम, इतना रिलैक्सेशन बहुत टाइम बाद मिला है। And actually, I'm really, really happy for Arsenal fans. इंडिया में फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है। दशहरा आया था, दिवाली इज राउंड द कॉर्नर, एंड वही फेस्टिव सीजन अब आर्सेनल के फैंस प्रीमियर लीग में देखने को मिलेंगे। मैं तो फुल ऑन एंजॉय भाई। हैप्पीएस्ट आई हैव बीन इन सो लॉन्ग। यार इट्स क्रेजी ना, ये कहाँ एक फुटबॉल क्लब, बीट एनी क्लब, फुटबॉल क्लब से अपना दिमाग का वो जुड़ चुका है। डोपामिन लेवल्स हारती है, डाउन, जीतती है। अब लाइफ में लगे हुए हो, वहां फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ जीतना चाहिए। पर लाइक इवन यूनाइटेड फैंस, राइट? यूनाइटेड अच्छा जीती है, दे प्लेड वेल फाइनली आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। देयर फैंस आर हैप्पी। आई एम काइंड ऑफ हैप्पी फॉर देम टू, क्योंकि मेरे इतने सारे दोस्त यूनाइटेड फैंस हैं। तो And it's very, very funny. Out of all Big Six, it was Liverpool who lost their game. Exactly, that too, even more. जो लिवरपूल आ रही है ना, उसका मजा और ज्यादा है। और जिस तरीके से आ रही है, उसका मजा और ज्यादा है। 3 losses in a row now. मतलब हम लोगों ने WhatsApp पे अपने अपने क्लब्स के सेलिब्रेशन इतनी ज्यादा एंजॉय नहीं करी होगी जितना हम लोग लिवरपूल का लॉस एंजॉय कर रहे थे। And every single Liverpool fan was keeping his mouth shut because they also know उनका बुरा टाइम शुरू हो चुका है। The silence of Liverpool fans on social media. Thanks to Chelsea, thanks to Crystal Palace, thanks to Galatasaray. Fun भाई, जितना उछले ना लिवरपूल फैंस recent history में। Before we get into the nits and grits of this episode, मैंने ट्विटर पे एक recently एक stat देखा. And it was like, Florian Wirtz has covered more ground than any other midfielder. And उसके नीचे रिप्लाई था, उसने बोला भाई तुमने 116 मिलियन में तुमने मिडफील्डर खरीदा है या फिर लॉन मोवर? तुम ग्राउंड कवरेज की बात कर रहे हो। रोड रनर खरीद के रखा है, मुझे भागता रहता है। अरे भाई जोड़ो ना ऐसे सुबह, तुम ग्राउंड कवर करने के लिए नहीं लाए हैं तेरे को। सेम उस पे आई सॉ अ मीम टुडे कि 38 गेम हो जाएंगे सीजन के और वर्ड्स का एक गोल एक असिस्ट नहीं होगा, बट चांसेस क्रिएटेड वुड बी द मोस्ट, एंड लिवरपूल फैंस वुड बी यूजिंग दैट टू डिफेंड हिम। समथिंग for sure. और एक और मीम आई गॉट इट फ्रॉम सोशल मीडिया। लिवरपूल दे लॉस्ट टू चेल्सी 95th मिनट विनर, लॉस्ट टू क्रिस्टल पैलेस 97th मिनट विनर। लिटरली उससे पहले की गेम्स लास्ट मिनट में जीत रहे थे, लास्ट मिनट में, और अब 2 मैच पे लगातार दे हैव बीन लिवरपूल। उल्टा जो पड़ा है ना भाई, कर्मा इज अ रियल बिच, राहुल, कर्मा इज अ रियल बिच। एंड डू यू रिमेंबर, मैं नाम नहीं लूंगा, आजकल ये भी चल रहा है ना शो में, नाम नहीं लूंगा। that episode we did with the Liverpool fan after Arsenal played Liverpool. No, before Arsenal played Liverpool. That was launched only on Spotify. Yeah. Remember how one certain Liverpool fan was acting? Acting too much out of his own shell, man. I texted him after the launch. You did? Oh my god. बंदा गायब हो चुका है। अभी बाहर नहीं आएगा, गुफा में है थोड़ा, बाहर नहीं आएगा I think until Liverpool actually make a decent comeback. Anyway, let's look at the table. 7 played, 16 points, top of the table. Liverpool second, 15 points, a point below. और गोल डिफरेंस का फर्क देख रहे हो, 7 का फर्क है। वाओ। आपसे एक सवाल है, बहुत हराम बॉल आर्टेटा, बहुत गालियां दी आपने रिसेंटली, अभी क्या शर्म आ रही है या अभी भी है कुछ अंदर? I have said this पहले भी,
और अब बात यही बोलूंगा, I would happily, take all the blame, take all the shout at me, and मैं 36 बार गलत साबित होने को तैयार हूँ. Lekin we also need to agree on the fact that yes, we did play haram ball at least for 3 matches in continuous, which really hit a lot of Arsenal fans. But now Arteta and Arsenal has, come into the senses. They now have agreed and accepted that yes, the squad that we have is not something for their I have another stat for you. Hmm. Touches in opposition box. This is after 7 games, by the way. Arsenal 250. उसके बाद United है with one. I don't know how it is United. Maybe their finishing is just that bad. They don't finish chances. That's why they are so far below. But उनका 198 है. तो अपने 52 touches ज्यादा है. तो ये जो हराम बॉल है ये हम ऑपोजिशन बॉक्स में खेलते हैं क्या? कहाँ खेलते हैं? नहीं, बट अगर तुम ये भी देखो ना लास्ट 4 मैचेस में हाउ अटैकिंग दैट वी हैव प्लेड, एंड आई डोंट नो लाइक ये एक्यूमुलेशन है टॉप 7 मैचेस का. हाँ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक मैच में 100 कर दिया उसके बाद 6 मैच में 150 हुआ. दैट इज नॉट Of course not. Yeah. दूसरा बिग चांसेस क्रिएटेड. आर्सेनल हाउ मेनी? 19. सिटी, पेप की सिटी आल्सो हैज 19. फ्री फ्लोइंग लिवरपूल नोवेयर टू बी सीन. वर्ड्स का यार मेरे को एक और आई हैव अनदर थिंग अभी थॉट आया है. वर्ड्स के लिए बोल रहे हैं ही हैज क्रिएटेड द मोस्ट चांसेस, राइट? Yeah. और द नंबर दैट आई सॉ वाज ओवर 20. Yeah, 22. It was something like that, right? So this is big chances on the screen right now. तो वर्ड्स ने अगर 22 चांसेस क्रिएट किए तो बिग कितने थे? लाइक लिवरपूल आर नॉट इवन इन द टॉप 5. तो वो फेक स्टैट है क्या है? आई डोंट अंडरस्टैंड भाई. अगर वी आर गोइंग बाय दिस स्टैट्स तो भाई उस हिसाब से तो फेक लग रहा है मुझे. लिटरली राइट. अभी थॉट आया दिमाग में. By the way, ये stats हमने Opta से निकाले हुए, तो we actually trust these stats than the one that has been flowing into our WhatsApp group. So I think that was just an excuse to to get some what should I say? Liverpool, थोड़ा दया मिल जाती है उनको. It's Liverpool. आपने स्लॉट के इंटरव्यूज देखे? स्लॉट के एक्सक्यूजेस देखे आपने? भाई, And I'm really happy that he's not Arsenal's manager. What did he say after the Chelsea loss? जो पेनल्टी क्लेम था कि ये चैंपियंस लीग वाला रेफरी होता तो पेनल्टी मिल जाती. ये तू बोल रहा है? लाइक यू लिटरली यू प्ले फॉर अ क्लब. पूरा का पूरा प्रीमियर लीग के फैंस बोलते हैं कि प्रीमियर लीग इज रिग्ड, द बिग बॉल इज रिग्ड एंड यू गेट फेवर्ड, एंड नाउ यू से दैट दे आर नॉट फेवरिंग यू. एक मैच के बाद तू ऐसा बोल रहा है. उससे पहले भी आफ्टर द क्रिस्टल पैलेस लॉस ही सेड कि चैंपियंस लीग में रेफरीज टाइम पे विसल बजा देते हैं, प्रीमियर लीग में गेम लंबा चलता है. यू योरसेल्फ हैव स्कोर्ड 3 times इन द प्रीमियर लीग दिस सीजन आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम एंडेड. एग्जैक्टली. तो भाई एक के बाद तेरे साथ उल्टा हो गया तो तू गाली दे रहा है. मतलब भाई यही तो डिफरेंस है ना. दैट बोलते हैं ना, when you win you shouldn't over celebrate, but when you lose you should take your losses with grace. And I think वही चीज नहीं दिख रहा है उसके अंदर बिल्कुल नहीं है. I don't think he's just fucking irritated. अपना गंजा सर खुजा रहा है कि साला कोई ढंग का एक्सक्यूज मिल जाए. बट even when he will see his own interviews उसको समझ में आएगा क्या बकचोदी कर क्या यार. I'm telling you I hate that guy. तो he talks और वो स्मग हो गया, पता है, प्राउड वाला लुक रहता है उसके फेस पे हर टाइम कि मैं गलत हो ही नहीं सकता. एंड आई हेट दैट इन हिम. मतलब भाई अपना पेप गुआर्डियोला doesn't act like that, who's probably the best manager of all time. He doesn't act like that. When it's not I zero tactics. If you remember जब like is in one of the episodes when probably the Spotify one I would suggest, and listeners अगर आप हमको Spotify में follow नहीं कर रहे हो तो it's a good time because the international break start हो चुका है. You guys can go to and listen to us on Spotify as well. But yeah, as I was saying, हमारे एक एपिसोड में we discuss कि slot क्या अपना मतलब is he really a really good manager कि भैया people should be scared of, और क्योंकि आपने पहले ही सीजन में प्रीमियर लीग जीतना. And I was the one who said he is maybe not he's a decent manager but definitely not a great manager because also the season that they won the league, it's more of Salah
than him. Salah carried them. Exactly. तो मुझे उस टाइम पे I never trusted Slot. I never trusted his stats because कुछ अलग नहीं कर रहा था वो. Klopp की shadow एक छवि थी till last year, and it's slowly, it's withering. Fading away. Yeah. It's leaving the club. Yeah. उसके Klopp के feel में तुम जीत गए. बस वही हुआ है. Exactly वही हुआ है. Kind of wavering. उसके 2-3 player क्या गए? You spent almost 500 million pounds, Great British pounds. You spent almost 500 million. You've gotten new players, 5 literally first team players, और सारा बैलेंस बिगाड़ दिया भाई टीम का. और उसमें से सिर्फ आएगा सिर्फ इकलौता प्लेयर बोलूंगा that would be Hugo Ekitike who has Who's flourishing kind of. flourishing under the immense pressure of Liverpool. और उसका भी डाउनलोड कर दिया ना इन्होंने. अब ईसाक आ गया. Ekitike, he was playing center forward. He was scoring goals, flourishing. अब ईसाक आ गया है. Isak has taken his spot. अब Ekitike बेंच से आता है. इससे दोबारा मुझे वो याद आया. वही एपिसोड के बारे में बात करूंगा जब प्रीतिश ने कहा था कि खिचड़ी पक जाएगी. नहीं पक रही. And then he is like, अरे कौन सी खिचड़ी नहीं, पुलाव बनेगा, बिरयानी बनेगी. Literally, and I've been watching videos on YouTube, the dissection Liverpool का कि what's actually going wrong. There's a whole lot going wrong. एक चीज नहीं, पूरा बर्बाद है. Anyway, too much Liverpool. वापिस आ जाए Arsenal पे. Sure. Let's obsess with our club now. Enough obsession with the. And before we say anything else, we are not getting carried away. I know it's just 7 matches. This is intentional. बहुत लंबा पड़ा है सीजन हमारे पास, लेकिन this was definitely needed because of all the shit that has been thrown at Arsenal's face and Arsenal fans' face. Yep. This was needed. This was needed. This is our therapy too. हम यहाँ बैठ के बक तो करते हैं, पर this helps us. Very well. Anyway, सबसे पहले थोड़ा सैड से शुरू करते हैं हम. Odegaard injured yet again. First player in the Premier League to be subbed off in 3 consecutive games in the first half. Twice shoulder. Yesterday it was his knee. I just feel so sad for him. Yeah, I just feel so sad for him. तो क्या लगता है आपको? Will Arsenal suffer or will we be okay? If first of all, I hope he recovers really soon. He is our club captain. And he has been showing some great signs that he's going to back off to his peak forms of 23-24 season, if anyone remembers. So yeah, a very quick recovery, very fast recovery for our Arsenal captain, for our club captain. Moving on to your question, would Arsenal suffer? If this would have been Arsenal of the previous season, 120%. I mean, last year itself, जब Odegaard injured हुआ, we were like, okay, season's gone. कौन सा टाइटल, कहाँ का टाइटल, कौन सा चैंपियंस लीग. Exactly. वो Marino carried Arsenal. Arteta's tactics and Marino playing centre forward carried Arsenal. पर वो वहीं खत्म हो गया था. But literally, I agree with you. This time we've got Eze. We got Ethan. We got like multiple players who could, invert and act, play into his role. Yep. All thanks to Andrea Berta and Michael Arteta and for the business that they have done in the summer. Also, I found another graphic. It compares Arsenal ka squad depth. Last year, when we lost to West Ham, when we played them on the 22nd of Feb, and when we played them yesterday. Ab bench ko dekho, last year we had 2 teenagers there. Nathan Butler, OADG was our sub. Jorginho, Kiwior. Okay, Kiwior was decent. Luis Kelly, okay, decent. Neto, goalkeeper हमारा. Sterling, who literally did not play in the second half of the season. Kieran Tierney, he was supposed to be sold in January last year. Yeah. He was supposed to be sold in January last wala window. He wasn't because injuries इतने हो गए थे. But Ben White था. Ben White is fine. Or फिर Zinchenko, who is out as well. Every single player on the bench that we saw on West Ham's match was far better upgrade, I would say, to the players that we had last season. So, अब तुम देखो ना, Nathan Butler की जगह we've got Christian Mosquera. Yeah, Christian Mosquera played in place of Saliba 3 game. फर्क भी नहीं पता चला. Arsenal fans were like, bench Saliba, Mosquera खिलाओ. Exactly. Neto की जगह we've got Kepa. Wow. Yeah, wow. ठीक है.
We've got Martin Zubimendi in place Ha, of Yogino. before you move on, I just saw today. Uh, Saraya, he posted on his Instagram. His wife's pregnant, about to have a baby. तो Oh. ऐसा नहीं पता कि कब होगा ये सब. Obviously, I don't know, but it's possible. If it's soon, maybe Raya doesn't play a game and Kepa has to play. And even then, And we would be fine with that. Yeah, exactly. Exactly. I'm not scared. I'm like, yeah, खिलाओ, Kepa को खिलाओ यार. Raya, इसी take को a भी break. खिलाओ. You played a lot of games. You take a break. Telling you, इसी को it's भी खिलाओ. क्या upgrade हुआ. Yeah, upgrade. Now, talking about breaks, Martin Zubimendi has been playing all of the games that since his arrival. Yeah. उसको उस बेचारा को एक गेम दिया कि थोड़ा आराम कर ले. Bad लेकिन guy. बेस्ट है मैं और ओडेगार्ड खेलेगा तेरी जगह. And by the way, this is the most attacking midfield that we have seen under Arteta. Odegaard, Eze, and Declan Rice. He knows. Every single player in that midfield, whenever they will get an opportunity, they're going to score, they're going to provide an assist. Yep. And मैंने तुमको text भी किया था क्या, see, this is the most attacking lineup that we have. We are going to score so many goals. That was the jinx. That was the jinx, and I should not have said that. I think मैं कुछ ज़्यादा ही excited रहता हूँ. बंद रखना चाहिए मुंह कभी. मुंह बंद करना चाहिए. मुझे 90 मिनट तक मुंह बंद रखना चाहिए. But nevertheless, as we have already spoken earlier also, this time around we are fine, we are chill. Of course, we do want our best players to be available. But इस बार ऐसा हुआ है, और इस बार हमारे जितने भी 3 key players थे, William Saliba, Bukayo Saka, and now Mr. Club Captain, Mr. Odegaard has been injured. And not just for the first time, it has been injured for like multiple occasions. Yeah. In spite of that, who is on top of the league? It was Arsenal. So I think we are very well satisfied, and that I think this is how you feel when you have a thick squad, players full of capabilities, of players who you could trust upon. कि ठीक है, अगर ये नहीं खेलेगा, तो I have this player and I have full trust on him. Yep. And then all thanks to Arteta and all thanks to Arteta. Manchester City, they've enjoyed this particular luxury. Yeah. For like 10 seasons now. Exactly. It's because as Arsenal fans, we never had it. That's the same. या तो बच्चा बैठा होता है, तो कोई टीनेजर बैठा होता है बेंच पे, या कोई ओल्ड ही होता है who we don't even want to see play, और हम ऐसे होता है किसी को इंजरी ना हो जाए भाई, किसी को इंजरी ना हो जाए भाई. First time we have this luxury. And this time around, the only बच्चा that we have is Max Dauman, जो कि बच्चा नहीं है. वो बस उम्र में. He's a different monster. उम्र में बच्चा है, उसके अलावा कहीं से बच्चा नहीं हो. Exactly. इसी से याद आया. Remember that incident against वो towel वाला incident? Oh wow. But that was really funny, man. Now this time he was allowed to use a towel. Funny why he wasn't against Newcastle. Calafiori actually posted on Instagram. Well, Calafiori is the most, I would say, he's a personality on our social media. Yeah. I still remember there was this game where he, scored. No, not he scored, but he tried to score against Manchester City. तो एक ग्राफिक आया था ट्विटर पे कि कितना बड़ा गोल होएगा, then finally Calafiori will score. तो वो गोल यहाँ से स्टार्ट होता है और इतना बड़ा बन जाता है, and then he finally scored. उसने वो चीज भी रिपोस्ट करी है अपने ट्विटर पे. Really, wow. बोल रहा, he's a different guy. Like if this podcast is our way of shutting up opposite fans, वो Calafiori का Instagram है to shut up people. And you need to shut these people up क्योंकि बहुत ज्यादा बोलते हैं, कभी बहुत ज्यादा बोल देते हैं. And पर जब ये पोस्ट देखा ना मैंने, मेरे को थोड़ा अंदर वो भी लग रहा था कि भाई पिगमोल का एफए का इसमें भरोसा नहीं है, इसमें ऑफेंस लेके किसी का ईगो हर्ट हो जाएगा और इस पे फाइन लगा देंगे, सस्पेंशन डाल दो, फैन डाल दो. कुछ भरोसा नहीं है भाई, मेरे को कुछ भरोसा नहीं है. Next, let's talk about अपना golden boy, or maybe the golden man now, because he used to be a boy. Yeah. Uncle बन गया Saka. Saka has now become an uncle. Uncle Saka. Our golden boy who is a man now. He is the 7th youngest player in the Premier League to reach 100 goal contributions. Wow. 55 assists, 45 goals at the age of 24 years and 29 days. Amazing, right? Remarkable. Like, already a legend for Arsenal, right? Already. No doubt about that.
यार ऐसा लगता है ना कि ये भी कल की ही बात होगी, when Saka was playing at the left back. वही मतलब वही अभी तो आया था, और now अभी he is has established himself as a legend. अभी 4 साल पहले की बात है. He was a little boy. Literally, look Yeah. at him. Such a Wow. little boy. वहां से आज का जर्नी. 6 years on, he's literally made himself an Arsenal legend already. और आर्सेनल के आप अगर सिर्फ आर्सेनल प्लेयर्स को देखो ना, तो ओनली सेस्क फैब्रेगास. He's the reason I started watching football. Cesc Fabregas. Yeah. Yeah. He's the only player who was younger than Saka when he achieved his 100 goal contributions in the Premier League. Yeah. It is so amazing. Some times different थे. Fabregas left us for Barcelona. Do you see Saka going anywhere? I don't see it, man. I just don't see it. Right. Right. The guy came from the academy, established himself. He is now one of the best players in the Premier League. We just have to win the league. We just have to win the league to, to lock down these players. And I think in this era of modern football where money is so much that it can, distract your mind. Mhm. I think on the other hand, Saka is a player सोचता है यार ये अपना बंदा है. हाँ. You have so much trust. मतलब इसको अभी तुमने पिक्चर दिखाई थी इसके बचपन की, and it felt like that, like we are the father of this kid and we are so proud. I love this boy. मैं बॉय बोल रहा हूँ भाई उसको, वो अपने से छोटा है. Like when we were younger, all these players used to be older. Right now, like this, Correct. he's younger than us. He's literally he's 24. बच्चा है यार, and he's done so much for this club already. Amazing. मतलब ऐसे ऐसी फीलिंग आती है कि यार हमने परवरिश सही करी अपने बच्चे की. He did really so good. Yeah, पता नहीं yeah. वो हम नहीं बोल पाएंगे in our future, but like at least Saka is proving us, proving us right. 100 goal involvements for Saka, 200 appearances for Arsenal, and there is another centurion was in the dugout, Mikel Arteta, managing 300 Arsenal Oh games. yes. 179 था उसका, 60% win rate. That's best for an Arsenal manager. और पता है, with the number of games he has coached, उसने अपने आप को भी Hall of Fame में डाल दिया. If you look at the number of games certain coaches have needed to reach इतने wins, Arteta is on number 5. Yeah. He did not have any job experience before. उसका पहला job है life का. I know पहला proper job. I know Arsenal have given him time, और Arsenal fans बहुत frustrated है, बात पे बोल देते हैं ट्रॉफी कहाँ है. पर he has done so much for this club. भी 5 साल पहले कहाँ था यार Arsenal? We were literally eighth यार. तो मैं बोल रहा हूँ, क्या कहाँ से कहाँ लाया है भाई क्लब, और अब कि तुम मुझसे इतना डिमांड कर रहे हो अब कि ट्रॉफी जितानी तो निकल है उस बंदे. और पता है, एक और व्हाट्सएप ग्रुप है आपने उसमें आई शेयर दिस स्टैट, ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एंड आर्सेनल फैन एक रिप्लाई पता क्या करता है मेरा, बोलता है तो इट वाज कंपैरिजन राइट कि पेप नीडेड दिस मेनी गेम्स टू विन 180, मूरिन्यो नीडेड दिस मेनी, फर्ग्यूसन नीडेड दिस मेनी, तो आर्टेटा वो 500 पे था. तो बोलता है 300 गेम के बाद ट्रॉफी का स्टैट भी भेज दो जरा. एंड आई वाज लाइक ब्रो कैन यू शट अप. साले मतलब थोड़ा सा रिस्पेक्ट यार, कम ऑन. रिस्पेक्ट एंड प्लस पीपल नीड टू टेक इनटू द कंटेक्स्ट कि जो नंबर ऑफ गेम्स बाकी मैनेजर्स ने लिए हैं उनके पास स्क्वाड भी कौन सा था, कितना सपोर्ट मिला था ओनर्स से. स्क्वाड था एंड दे हैड 10-15 years of experience beforehand. Exactly. Arteta was 37 when he took over Arsenal. He's what, 44 now, 45 now. Yeah. These managers, Mourinho when he came to the Premier League he was 50. अपने ये ऑन्स को देखो. Yes, he won the Europa League with Spurs. अभी नॉटिंघम फॉरेस्ट लगा दी उनकी, बेड़ा गर्क कर दिया. He is 60. Arteta 50 का नहीं हुआ यार. You expect? I'm not saying don't expect anything, but of course you have to. There needs to be respect though. Like that's all I'm saying. और पता है जब आर्सेनल जीतती है भाई, मैं तो इंटेंशनली शेयर करता हूँ आर्सेनल का सारे गुड स्टैट्स की, बिकॉज़ आई वांट टू हाइप आर्सेनल अप, हाइप कोच अप, क्योंकि बाकी तो हर टाइम रेडी रहते हैं लगाने के लिए. तो तू एज एन आर्सेनल फैन सपोर्ट करना. तो ये क्या बोल रहा है ट्रॉफी. तो एनीवे साका की बात कर रहे थे ना. Yeah. साका की बात कर रहे थे. तो साका feels like he's kind of flourishing.
वेस्ट हैम अगेंस्ट कितना अच्छा खेला. तो why is he playing so much better? Because of there's a certain figure up front. Yes, because of Gyökeres. Yeah. Literally last year, Saka used to have exemplary stats, even though he used to be marked by 2-3 men at least. अभी वो सारे कौन खींच के बैठा हुआ है? Gyökeres. क्योंकि Gyökeres का physique ऐसा है. Yes, he doesn't have the pace, but he has the physique. He has the positioning of the ball run है, anticipation है, shot में power है, सब है. कि other teams know that he needs to be stopped. If he's not stopped, he will score. तो आप उस पे चिपक रहे हैं, तो that's helping Saka. Gyökeres के बारे में and it's just sad to see a player like Gyökeres not in the number of goals. I guess 5 match हो चुके हैं if you include Champions League matches also, but he hasn't scored. But I think it's not a sign of worry. We have seen the glimpses of his what should I say of him scoring goals. चाहे वो अपनी positioning improve करना हो, चाहे अपने passes को time करना हो, yeah, even when you know when he started, I guess उसका hold up play भी अब थोड़ा improve हुआ है from when he came back. He's improved in everything. Exactly. So it's just about time. I think international break अब जैसे ही खत्म होगा, I think we would see a different Gyökeres, especially when he will get around his in Sweden camp and when he was again started scoring goals, because he does score a lot of goals for Sweden. तो दोबारा से वो फील आएगी गोल मारने की, दोबारा से वो एक जज्बा आएगा, एक पैशन आएगा to score a lot of goals, and I think that will be transferred eventually to the Arsenal football club. Yeah, and you know what I like about him is he doesn't give up easily. Yeah. Like just last year, 2 seasons in a row, he scored almost 50 goals each year, right? 2 years in a row. Yeah. अभी 5 मैच से गोल नहीं आया. But the manager is not benching him. Words का हाल देखो आप लिवरपूल में. बेंच कर दिया. बेंच हो गया. This benched him against Chelsea. Gyökeres is not being benched. Arteta ऐसा आदमी है, if you don't perform, he'll bench you. So, Yes, but he doesn't care because Arteta knows कि गोल नहीं आ रहा है, but he is still doing enough. He's making those runs. 2-3 प्लेयर अपने ऊपर चढ़वा रहा है वो. He's struggling so hard. आके कोई भी इतने बॉडी पे उसके इम्पैक्ट है, he's taking it all and he's still there. Last match, West Ham, he played full 90 minutes. Full 90 minutes. He is doing enough. मतलब yes, you need more goals. Goals की बात करते हुए penalty. Be honest. Would you have been happier? Yes, Saka scored that penalty. I would have been so much more happy अगर Gyökeres को मिलती हो penalty. I was aside with that, but I think कहीं ना कहीं we both understand why Saka took the ball in his hand and he's like, no. Sorry, Gyökeres, sorry, Victor. Next time. 200 गेम खेल चुका हूँ. This is a golden opportunity to make it 100 and बहुत अच्छी सिमेट्री बनने वाली है. अच्छा थोड़ी लगेगा 201 मैच में 100 गोल का कंट्रीब्यूशन करना. So it doesn't look nice, right? अच्छा तो फिर भी लगेगा, पर 200 में पाना ज्यादा अच्छा है. Symmetry जो बनती है. Maybe Saka is a fan of symmetry. Who knows? Maybe. Who knows? Maybe he's just as usefully as us. बिल्कुल एकदम प्रॉपर चाहिए अपने को. Perfect. But nevertheless. 50.0%. Yeah. But nevertheless, he took the opportunity. He took the ball in his own and वो आया भी था. विक्टर भी आया था. मेरे को लेना है ना. I am the registered penalty taker. He was like, Saka, can I take it? Like, that's how they talk on the pitch, right? Saka. Yeah. Take it. And Saka was like, Saka looked at him, said something, and just walked to the penalty spot. And everyone was like, okay. He was like, fuck off. But even after that, after Saka scored, Gyökeres was like one of the first celebrate with him. Players. He was one of the first players to literally go and hug him. So there's no love lost there. Gyökeres understands. Of course not. Even in his like post-match interview, Saka the question किया क्या कि what about this penalty incident? Isn't that like Gyökeres should have taken it? And he was like, बोला this is something that I want to keep it inside the house. तो ये भी एक अच्छी चीज है that we don't share things बाकी out because media can interpret in the ways that you can't even imagine. Maybe one particular figure named Arne Slot, he needs to learn. He needs to learn that, right? He needs to learn from a 24-year-old कि अपनी media duties किस तरीके से handle करी जाती है. क्या बोलना है क्या नहीं. Right. And again जब बात कर रहे हैं लिवरपूल की,
तुमने कहा था कि दिस दिस वाज द लाइक अपॉर्चुनिटी होती है आपको आपके प्लेयर्स को पुश करने की एंड आर्टेटा इज एज रूथलेस एज एनीवन अगर परफॉर्म नहीं करो ही विल बी बेस्ट तो जब लाइनअप आई थी लिवरपूल की अगेंस्ट चेल्सी एंड पीपल वर लाइक दिस इज द बेस्ट पोजीशन फॉर फ्लोरियन वर्ड्स एंड आई वाज लाइक कहां स्टार्ट कर रहा है वो Ben. he was literally sitting on the bench and that was his best position भाई it looking like कि that is his best position. बहुत ज्यादा हो जाएगा लिवरपूल का. I don't wanna go off topic. आर्सेनल वापस आते हैं. Talk about our defense. 7 प्रीमियर लीग मैचेस हो गए हैं, 2 चैंपियंस लीग मैचेस हो गए हैं. We have conceded 3 goals thus far. yeah First goal was a corner kick. The second goal was Shobo's like a free kick. yeah The third goal was Haaland. 3 goals. Champions League 2 games, 0 conceded. and that's it Are we the best defense in the league? best defense in the league by far What about the world? I think we are probably the best defense in the entire Europe. I think PSG come close. They have shown defensive solidity this season. They have kept, I guess, 4 clean sheets in their first league matches. This achievement is basically only surpassed by Lyon, I would say. Okay? And despite They losing to play in the Marseille, French league. They play in the French league. of course they have, but you also need to understand that they haven't suffered consecutive defeats, the consecutive away match defeats in League One since January 2023. Okay. So that's Still, that's it's the that's French something. league. It doesn't even That's come something. close. Anyway, if you look at the stats, Arsenal have conceded 3 goals thus far. उसके बाद PSG है. Ritesh rightly said PSG comes close. 7 goals conceded. पर Arsenal के 3 है, PSG के साथ Arsenal less than half. After that, it's Manchester City 8. फिर Bayern है 9. So we are Certainly, we are the best defense in the entire Europe. one of the most elite defenses. But And this is one of the reasons why clubs like Madrid are hovering our centre backs. वो तो सलीबा ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया. Now they want Konate. Konate's head is maybe already there, which is valuable. Yeah, it's already. Who knows? Saliba. Let's talk about them individually, quickly, very, very quickly. Yeah. Saliba. World में कौन से नंबर पर रैंक करोगे सर सेंटर बैक? He's definitely top 3. Gabriel? Definitely top 3. I think I would put him in the same bracket. If someone will push me, I think top 5, no doubt. Is Virgil van Dijk better than either of them? This season? Definitely not. I think but problem यही होती है ना इनके साथ डिस्कशन करने में. They have like they bring him stats from the past and whatnot. But I also understand he has enough credit in his bank to back his mistakes and whatnot. But that's why I said कि मुझे push किया जाएगा तो I might say ठीक है यार ले आओ इसको भी लीग के अंदर. But yeah, this season definitely not. And जो उसने गोल खाया है चेल्सी के अगेंस्ट जो मीम्स चल रहे हैं वर्जिल वैन डाइक के I think वो देख के I don't think any Liverpool fan could can come up with us and say कि वर्जिल वैन डाइक. They can't even compare. अभी का सोचो that they can't even compare. And even that goal, Van Dijk का record है ना वो no one has ever dribbled past. Now we know why. It was like कैसे तो गोल मार ले भाई शॉट ले तू गोल खाली है. ड्रिबल नहीं करना लेकिन. Don't dribble past. You can shoot. Remember मैंने यही चीज मैंने तब भी कही थी when someone came again the same guy we are talking about the podcast and he's like ऐसे कैसे बोल दिया वर्जिल वैन डाइक के बारे में. Overrated. Well, you did. मैंने बोला था भाई I'm not talking about overrated in the sense कि उसने पिछले seasons में किया. I was talking about this season. I can see the signs from the friendlies till that match. I was like, I haven't seen the Virgil van Dijk of old. He's on decline. Maybe उसको support नहीं मिल रहा है जो भी reason है, but you cannot trust Virgil van Dijk in today's time. And that has shown by Chelsea itself. तो Arsenal fans आज का एपिसोड करते हैं यहीं पे खत्म. If you like our content, please like, share and subscribe. 44 subs हो गए हैं, 50 के बहुत ही क्लोज है. ऑल्सो बहुत ही सून हम करने वाले गिव अवे की डिटेल्स विल बी शेयर विद यू वेरी वेरी शॉर्टली आने वाले 3-4-5 एपिसोड्स के बाद. ऑल्सो इंटरनेशनल ब्रेक है, दशहरा भी गया है, दिवाली आ रही है, एंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ. हैप्पी दशहरा टू यू गाइस, हैप्पी दिवाली. अभी ब्रेक लो, रितेश और मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक लेने वाला है अभी ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ब्रेक.
एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो. You are for sure going to enjoy this journey with us. Ritesh and I, we are very very thankful कि आप लोग you listen to our episodes. तो माइक बंद, मस्ती चालू. See you in the next episode.